Okay, so good morning, everyone. On behalf of Swasti Foundation, I, Swapnali Munim, would extend a warm welcome to all of you for celebration of Girls' Child Day. Today's program we are conducting in association with Cancer Patients Aid Association and College of Home Science, Pantnagar. So all of you are aware what, and whatever, if I ask you any questions, I would like if you can just, drop a comment in the chat box. So today's day basically is, Girls' National Girl Child Day is celebrated every year in India on Jan 24th. And it was first initiated in 2008 by the Ministry of Women and Child Development. Now, this day was observed every year to spread awareness regarding the inequalities faced by girl children in Indian society, and also to promote the rights of the girl child in regards with importance of female education, health, and nutrition. Now, there are various awareness programs which the government has been undertaking. To name a few, it's something like Beti Bachao, Beti Padhao, Save the Girl Child, Educate the Girl Child campaign, Beti Zindabad, etc. They're organized by state governments to close the gender gap and give every child the equal opportunity to grow and fulfill their dreams. Now, the National Girl Child Day is celebrated every year with events and programs based on annual themes. In 2019, the theme was Empowering Girls for a Brighter Tomorrow. The theme in 2020 was My Voice, Our Common Future. 2021, it was Digital Generation, Our Generation. This year, the Ministry of Culture organized the event called Umang Rangoli Utsav as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. In Swasti Sukham, we also believe in empowering and educating to the girl child. That's been basically the center, the girl child, the development of women is being our center core. Now, to tell you something about our organization, Swasti Sukham. Swasti Sukham Organized Foundation is a national non-profit, educational, charitable, and human service organization rendering services and implementing projects in more than 8 states across the country. It also works in special activities relating to health, education, sustainable development, and conflict resolution. Our founder, Dr. Archana Gupta's work has been dedicated to reviving human values and bringing about health and happiness in everyone's life, and development to an individual's commitment to joyful living, selfless service, and self-awareness, which has been doing since, I think, a couple of decades. This foundation was established on 19 October 2018 as a non-government organization under the patronship of Mrs. Urmila Gupta, in beloved memory of late Sri Subhash Chandra Gupta, who are parents of Dr. Archana Gupta. Now, Dr. Archana Gupta has done her Masters in Foods and Nutrition in 1993 from GBPUT ANT Pantnagar. She's presently working as head of Department Nutrition and Dietetics, CLH Group of Hospital, Ghaziabad. She has been associated with many social organizations since 2007. The focus of her work is to eradicate malnutrition and lifestyle-related issues from all ages and genders, and preservance of local inheritance. The founding members of our, as I said, we are like spread across 8 states. Now, these are few of the members of our organization. Mrs. Urmila Gupta being the patron, Archana Gupta herself, Poonam Mohan, who's from Delhi, Ms. Soni, who's from Maharashtra, Monica Gupta, Dr. Monica Gufra from UP, myself, Swapnali Munim, who's from Maharashtra, Dr. Premlata Srivastav, Bihar, dietitian Radhika Sarda, dietitian Neha Gandhi, dietitian Anu Verma, dietitian Neeti Dubey, Ms. Rekha Garg from UP, Ms. Madhubala Singh from Delhi, Ms. Rajni Chandel from Himachal, Ms. Prasoon Agarwal from Telangana, Dr. Preeti Pant from UP, and Ms. Sunita Sharma, Rajasthan, and Ms. Veena Chadda from Uttarakhand. The vision of our organization is to work towards building healthier and resilient communities with a holistic approach and a proactive approach of improvement in child nutrition, health, and education by improving the livelihood and surroundings, by enabling the care of Mother Earth, which is one of our green projects. We are very much,
thinking about conserving the nature in various fields. I mean, yesterday we had a fantastic session. Every Friday, we have a session at 5:15 p.m. where you can log in, where we take some very important topics which are important for us in the day-to-day life. So yesterday's topic was Green Earth, which was fantastically, programmed by our own member, Dr. Monica Gupta. The mission of our organization is to be a knowledge or an execution partner of schools, NGOs, corporates, and government agencies, development of communities across India and abroad, and to ensure that everyone gets happy, healthy, and a wealthy life. Now, main areas of work being menstrual health and hygiene, which is our core, Green Earth project, that is Save Our Earth, nutrition, health, and happiness projects. We have, as you have seen when I told you about the members of our organization, we have so many dietitians who are paneled with us, yoga and meditation. Then there is a skill development program, scientific cultural preservance, helping aid, and donation drives. Our work experience, we have been working with corporate offices, police force, hospital staff, university teachers, and students, RWAs and NGOs, and school children of rural and urban population. We have conducted in this pandemic many seminars, workshops, webinars, and also some online competitions. Like I think in this last couple of years, we have done a lot of workshops for menstrual health and hygiene and health and nutrition, as well as for diabetic care, which has been very successful and which we have had a lot of audience across India. Like there were schools which we have catered from Maharashtra, from UP, and we have almost had a response of around 200 students, joining us. And it was a very fantastic and an innovative and an informative program. Online education lectures during COVID period on different topics. We had poster and drawing competition, to name a few. During COVID, we have helped a lot of migrants. We have conducted blood donation camps. We did a homeopathy camp. We had health checkup camps, tree plantation donation drive, and also running a school and skill development program for underprivileged children and the family at Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh branch. To give you a glimpse, this is our green conserve. This is that we donated the homeopathic medicines. This is working with the underprivileged children, making them happy and making them part of our celebrations. These are the various webinars that we attended. Thank you. Okay, going on the same lines as we say, and we believe in empowering the girl children and the girl child. Today's program, we are going to talk about, nutrition, health and behavior of a girl child, prevention from cancer, and we are going to talk about various laws and rights of the girl. So to start, to commence with, let me welcome Dr. Archana. Alka Goel is there. Was ma'am able to join in? No, ma'am is not able to join now. She will. She's trying hard. Let's see when she is joining us. Yeah. Okay, fine. So then let's start by welcoming, without much ado, our founder, Dr. Archana Gupta. So welcome, ma'am, and looking to hear from you. What is the health and nutrition tips that you can give for our girl children? Welcome aboard. Thank you, Sapnali. And thank you everyone for joining us today. On behalf of Swasti Sukham Care Foundation, I really welcome and warm welcome from my side and my team. And here, Dr. Sarita Srivastav is there. Ma'am, are you there?
Sarita ma'am? Sarita ma'am, can you hear me? Yes, the ma'am is also actually today is so much problem in the network system. Many of guys are unable to join us. So the ma'am is joining. Yes, think. Yes, very good morning. I am hearing you. I am here with you. Thank you, ma'am. Thank you for joining us, ma'am. And Dr. Archana Raj Singh, can you just enlighten us a little bit and open the session for us, because she's the senior most person presently available for me, and I want her to take the session. Start. Good morning to everybody, and thank you, Archana, for inviting me. And today, first of all, I will say a poem and a story about a girl child, how she suffers. Okay, ma'am. जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियां साथ लाती है बेटी. जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियां साथ लाती है बेटी. ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी. तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी. त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी. जिस घर जाए उतावली होती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी. बेटी की किस्मत उससे पूछो जिनके पास नहीं हो, कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी. ये मेरी कविता थी. और एक क्योंकि मुझे इसने 5 और 10 मिनट का टाइम दिया था, तो मैं उसी में आप लोगों से. मैम, यू टेक योर टाइम, डोंट वरी मैम. नहीं, देखो उतना ही है कि सब इतने लोग हैं कि हम उसमें ही बात कर ले तो बहुत बढ़िया है ना. जी मैम. अब मैं एक कहानी बता रही हूँ कि एक गर्भ में 2 बच्चियों का पहला परिचय होने पर दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुराती हैं. पहली ने दूसरी से कहा, ओ बहन, आप मेरी बहन हो? हाँ, शायद भगवान ने हमें जुड़वा बनाया है. दूसरी ने खुशी जताते हुए जवाब दिया. कहते हैं जब कोई नवजात अन्न नहीं खाता, उसे अपने पिछले जन्म का याद रहता है. आपको याद है? पहली ने दूसरी से पूछा. हाँ, पिछले जन्म में मैं एक लड़की थी और तुम? दूसरे क्षमता का जवाब देकर प्रश्न उसने कहा, मैं अपने जन्म में एक लड़का थी. दिन भर बस मौज मस्ती करती थी और जिंदगी मजे से चल रही थी. एक दिन शराब के नशे में तेज रफ्तार से कार चलाते हुए मेरी दुर्घटना हुई और अब मैंने बेटी का जन्म लेकर तुम्हारे सामने हूँ. पहली बेटी ने अफसोस जताते हुए कहा. दूसरी बेटी की देखते हो कब? और तुम कैसे मरी? मैं तो जन्म से पूर्व ही कोख में मर गई थी. मरते वक्त मैंने ईश्वर से यही मांगा था, भगवान अगला जन्म मुझे लड़की ही बनाना. लड़की ही क्यों? पहली ने चौंकते हुए कहा. क्योंकि लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं. दूसरे ने गर्व जताते हुए कहा. लड़कियां कब से बहादुर होने लगी? पहली ने हंसते हुए कहा. क्योंकि वो पहले लड़का थी. दूसरी लड़की ने उसे कोई जवाब देती उससे पहले ही गर्भ में उसे अपने चुभन से पहले ही कोई चुभन सी नजर आने लगी. चुभन सी महसूस. आराम गाह में धारदार हथियार से प्रवेश होते दोनों लड़कियां सुन थी. पहली लड़की की आंखों में जहां डर नजर आ रहा था, दूसरी बड़ी शांत थी होकर अपने सिर गर्भ की दीवार पर टिका दिया. उसे यूं शांत देखकर पहली ने कहा, पूछा, मौत हमारे सामने है और तुम्हें डर नहीं? दूसरी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं तो पिछले जन्म में भी लड़की थी और लड़कियों तब बहादुर होती हैं. बहुत धन्यवाद अर्चना दी. अर्चना दी हमारे कॉलेज ऑफ होम साइंस से उन्होंने बीएससी किया है. 1972 बैच हमारी, वो सीनियर अभी हैं हमारी और हमेशा मेरे को राह दिखाती रहती हैं, मुझे बताती रहती हैं किस तरह से आगे हम काम करें. और अर्चना दी केवी
के साथ में भी जुड़ी रही हैं बीकानेर में। रचना दी, अपने बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। हाँ, मैं जो रिसर्च में भी रही, एक्सटेंशन में भी रही, केवीकेज में, और मैंने 12 के 15 साल में होम साइंस कॉलेज में रही और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन से बड़ौदा से एमएससी की थी और पीएचडी मैंने इन सर्विस उदयपुर मतलब स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की, और बीकानेर में मैंने होम साइंस कॉलेज की डीन की, और 2016 में मैं रिटायर होके अब अपना जीवन जो है आराम से बिता रही हूँ। अब वो करती हूँ जो मेरा मन करता है, और मैं नई नई चीजें सीखती हूँ और नए नए काम करती हूँ जो मैं पढ़ाई के साथ नहीं। और आज भी मैं बता दूं, एक जेट सेटअप 50+ का ग्रुप है इंटरनेशनल, और उसमें पहले मैं ऐसा लड़ना ज्वाइन किया था मैंने कि चलो कुछ टेक्निकल चीजें सीखें। उन लोगों ने मुझसे बात की, एंड नाउ आई गिव क्लास माय डेमोन्स्ट्रेशंस इन कुकरी, मैक्रेम वर्क, टाई एंड डाई, बाटिक, आई से स्टोरीज, आई रिवाइज क्लासिक फिल्म्स का भी मैं करती हूँ, और कभी सम्मेलन भी कराती हूँ। ये मैंने आजकल अपने को ऐसे बिजी जोड़ रखा है, और एकेडमिकली जहाँ से जो काम आ जाता है वो कर देती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप हमारे लिए सचमुच बहुत ही बड़े प्रेरणा का स्रोत है। और एक बात और है, पंतनगर से जो कड़ी से कड़ी मिला के रखती हूँ, और यहाँ जितना हमारा एनसीआर में वी ऑल मीट, और हम लोग बहुत एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि बीएससी करने के बाद हम लोग बिछड़ गए थे, अब मिले, और सब रिटायरमेंट के बाद मोस्टली आके एनसीआर में बस गए, तो वी फील वेरी प्राउड टू मीट। हमारा सौभाग्य दीदी कि आप हमें आप अपना आशीर्वाद देती रहती हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और वुमेन्स डे पर हम दीदी के साथ बहुत एक धमाका लेकर आने वाले हैं जो हम मार्च में सेलिब्रेट करेंगे, और भी होप कि सब कुछ अच्छा होता है तो हम ऑफलाइन करने वाले हैं। तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ, जितने हमारे यंगेस्ट है ना, दे विल फील लाइक ओ माय गॉड, क्या हम ऐसे हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दी, थैंक यू वेरी मच। Okay, so now I continue with my little bit presentation with, okay, and yes, everybody can see us. Fine. Yes, ma'am. So here is, visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay, thank you. So as my project manager Swapnalia said about something about the National Girl Child Day, I will not go beyond in the two things. I will going directly to the slides here. So happy National Girl Child Day once again to you all and every woman, because girl is going to be a mother. As you can see, she's a mother, she's a sister, she's a wife, she's a friend as well as a daughter. So why we are taking care of girls more? Because our life starts as a daughter only. When you kill a daughter, kill many others. All the relationship we have, we are killing if we are killing a daughter. So take a pledge. We will take care of our girls. We will not allow anyone in nearby vicinity, anyone to kill their daughter in a womb itself. Okay, fetal death पर हम लोग काम करेंगे आगे, तो इस पर हम लोग एक प्लेज लेना चाहेंगे आज on the happy this National Girl Child Day moment also, because as Vivek Thangar Swami said, every woman is a gift when she becomes a daughter. Every woman is beautiful when she becomes a lover. Every woman is special when she becomes a wife. Every woman is a good when she becomes a mother, right? So National Girl Child Day reminds us that it is our responsibility to give our girls the importance that they deserve and work together for their happier lives. And our Swasti Sukham Care Foundation is trying their hard to work for them. So if we ask, why do we not able to see my slides? Why do we celebrate National Girl Child Day? National Girl Child Day was first initiated in 2008. Guys, we are going to have a quiz also, so please hear all the sessions closely so that you can answer all the questions. So this is the day which is initiated in 2008
by the Ministry of Women and Child Development. The main objective of the National Girl Child Day is to raise awareness and tackle the issue of inequality that girls face in the country and enlighten everyone about the right of a girl child. Gender discrimination is a major problem that girls face throughout their life, that we also know. National Girl Child Day is observed every year in India on January 24 to promote awareness about the rights of a girl child and to promote the importance of their education, health, and nutrition. The day is aligned with government campaigns and initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao, Save the Girl Child, free subsidized education, and women's reservation in the colleges and university. So many things are there. We have just mentioned a few only. As we all know, healthy woman given rise to a healthy child, healthy children give rise to a healthy nation. Here you can see this picture. Earlier, we used to see like a ratio, sex ratio was girls were below the 1,000 and men's more or less above the 1,000 level. But this is the latest we have tried to find out. Like you can see here, like only the red portion here, some of the part of the Kashmir and the Punjab and the Delhi. These three states are having less than 950 sex ratio, and 950 to 1,000. A few part of this Kashmir, we can see Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and some part of the Arunachal Pradesh and the Tripura only. And rest of the country, rest of the states in our country, like Telangana, you can see 1049. Female are more. In Tamil Nadu also 1088. In Kerala, it's 1121. So most of the states are having nowadays more of the female in respect to the males. So this is a very good news for all of us, like we are really working on this hard. Why we need to take care of the girl? Because nowadays I am listening from many persons like लड़कों के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चलने लगे हैं, तो ओवर पावर हो रही है शायद लड़कियां. I have listened hear this thing once. So what is the reason? जो भी बीमारियां हमारे मेल्स को होती है सब फीमेल्स को होती है, राइट? उसके साथ साथ कुछ और चीजें लाइक यू कैन सी अबॉर्शन, ये जो हम दिखा रहे हैं इस स्लाइड में, ये सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है. तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ गर्ल्स और वुमेन मोर. Abortion, the premature expulsion or loss of embryo, which may be induced or spontaneous, right? Automatic भी हो जाता है, कई बार induce करना पड़ता है because of some reasons. Cesarean delivery, so surgical delivery of a fetus through abdominal incision, that you also guys know, it is a really painful through at least for the 6 months for that woman who has undergone this cesarean section delivery. Eclampsia, a serious life-threatening condition in late pregnancy in which very high blood pressure can cause a woman to have seizures. Family planning, as we all know in India, most of the people want like women should do the family planning, right? So the conscious effort of couples to regulate the number and spacing of births through artificial and natural methods of contraceptions. This burden is again on the female. Female genital cutting, traditional practices that are all related to the cutting of the female genital organs. Gestational diabetes, diabetes that develops during the pregnancy because of improper regulation of blood sugar, or sometimes it may go on through their life also. Like you must have seen gestational diabetes or the thyroid that the woman got during the pregnancy may suffer throughout the life if they are not taking care of their health. Or sometimes they even taking care of the health because of the changes in the genes in their cells, that this may continue further. So hemorrhage also related to pregnancy, significant and uncontrolled loss of blood, either internally or externally from the body. Antipartum prenatal hemorrhage occurs after the 20th week of gestation, but before delivery of the baby. Postpartum hemorrhages is the loss of 500 ml or more of blood from the genital tract after delivery of the baby. Primary postpartum hemorrhage occurs in the first 24 hours after the delivery. So here you can see kitni sari cheezein aisi hain just because of the uterus and because of our lifestyle or many things. Female are having additionally these type of pain facing during their life. So
What are the determinants of women's health? Mainly biological factors and the social factors. If we talk about the biological factors, iron deficiency anemia related to the menstruation. As we all know, the girl start bleeding around the 10-year of age nowadays. Earlier it was 14 or 15 years of age. So they start bleeding every month. I agree this is a natural process, but during this process, some of the blood loss is there. That is the bad blood, I can understand, but iron deficiency may occur during this time if they are not taking care of health. Complication related to the pregnancy that we have discussed just in the before slide, and increased susceptibility to some infections because of their body structure. Because there is the genitals are the open area. Whenever they sit down somewhere for the even the pee, they can catch the infection very easily, right? And so many other infections, same like conditions such as ovarian cancer specific to women, that is breast cancer, that is also possible because of the biological factors that we are seeing nowadays more often. Social factors like related to gender norms and roles, female abortion and infanticides that the women forced to do, and often less nutritious and food than the male child. You must have seen in your home itself, like whenever we serve the food to the male, to the home, then we always keep on, mother always keep on seeing like, बेटे की थाली में रोटी है या नहीं, पापा की थाली में रोटी है या नहीं है ना? और अगर एक ही रोटी बचे तो she try to give it to the others, or whatever left out they will eat. And in some family this is also happening, like male are taking the meal first, then the girls are, or the female of the family is taking the meal, right? So in that way less nutritious food is available to the female child, right? Nowadays, yes, because of the education, because of the equal celebration of the female girl child as well, this is not happening nowadays in a little bit extent. But yes, in the villages, in the some of the interiors, it is still happening, or even in the families of the Orthodox families. So male dominance leads to physical and sexual abuse. That is also very common, and some of the members are working on this aspect. Cooking with poor ventilation lead to respiratory diseases. This is also one more important, like they used to cook the food on regular basis. Sometimes they are not taking care of the ventilation. They are just busy in their cooking and all, and they focused on that thing. So because of poor ventilation, they may acquire some respiratory diseases. Low social status limits to health care. So these are the main reasons why the women's health are affected. So now we come to the what we need to do. First is our personal take care of the physical body, then the nutritional needs. As we have discussed so many factors or biological factors of a woman, here we can see like requirement for the body of some nutrient is much more higher than the males. Female need to concentrate more on some nutrient since their adolescent age for good health, because after that their body differentiate from the male, and some of the important organs develop in their body. So iron, calcium, folic acid, vitamin D, E, and zinc. These are the main ingredient along with the protein required extra amount for a female to take care of their body, right? And I'm not going to in the detail. We will taking the sessions every Friday. We will cover this topic upcoming month, the nutritional need for the March month, right? So just giving you an idea like what should be in your plate. Our plate should contain, here you can see 3 portions are related to the grains and the protein products, like dairy products, proteins, and the grains. And the rest of the 3 portions are with the vegetable, fruits, and water. So you can understand these are the 6 main factors of our plate that should be there in the diet. We have to take the dal or anything prepared with the pulses or beans, okay? Or the proteins like paneer or the soya protein if you are vegetarian, or red meat should avoid, and we can take the white meat, okay? So this will be the protein portion. Grains, you all know we should take all the grains, not only the wheat or rice, that is a staple diet of the India. We should take all the millets, all the coarse grain we can say, or we can say the small grains nowadays, like ragi, madhwa, everything, whatever available in your traditions or in your vicinity, nearby area, just grab all the fresh food that is available.
this is the season of winters, we can have lots and lots of bajra and makka in our diet also, right? Vegetables, as I said, whatever is available surrounding, and that will be a cheaper and the more nutritious, because no wastage of the nutrition through the storage is happening. We take lots and lots of fruits. So we should take 4 to 5 serving of fruits and vegetables in our daily diet. And water is also as important as our other food item, because that is going to maintain our the water balance and the fluid balance in our body. So we should take at least around 40 ml per kg body weight of the water throughout the day. Or along with that, whatever working we are doing, or additional if we are having much more of the sweating. Okay. So here, as we have discussed about the puberty, like hormonal changes are there. Why I am sharing this slide? Because we are taking care of one special project on menstrual health and hygiene, where we are taking care of the girls about 10 years of age till the age of menopause. The reason behind that is because of the peak of hormonal changing during this puberty, nutrition goes down because girls don't want to eat more. Female sex hormone is very active, so their psychological and mental well-being degrades. Genetically and biologically, they are different from the male. They should understand their body properly. And brain chemistry imbalance is also there during this pubertal stage. So, and stress comes arrive. Traumatic events sometimes happen because if they are not taking it positively, their heart may sink, and physical health problems may arise. So we have started this project, and we are trying our best to reach as many as people to us, so that we can plan physical this workshop or the online workshop with the RWS, with the schools, with the colleges. So I request you all guys, if possible, if you feel like you want to share this good knowledge, we have 2 days planned workshop where we tell each and everything about the anatomy, physiology, food intake, physical exercises, yoga, meditation, and everything, how to take care of pain during that time. So if anyone is in need, they can ask us. As you can see, like the menstrual health, how this is happening, I think everybody is knowing here, but it's still just a small picture here. Like you can see, this is the ovulation is happening during the ovarian cycle. It's every 21st day happening. And ovulation start around the 14th day, like 10 to 21 we say. Ovulation start, and our this uterus start the hardening of the lining to prepare the uterus for the pregnancy. But if pregnancy not happened, no one conceived, then ovulation starts, and it will take again around 10 days. So 28 to 35 days in between the periods starts is as a menses, as you can see here. So, sorry, how can we bring a change? Number one is awareness, that we are trying to do it. We need to educate the people. We have safe environment, so that we can provide them safe environment, so that every girl, every woman should feel like we are totally safe in our environment. Anyone can reach us, because we are having the advocates, we are having the psychologists, we are having the dietitians, we have the doctors in our panel. They will reach out to the person personally and help them. So we can create this thing for everyone. Ensure decent work, fair and equal wages, and a safe working environment for women. Recognize, redistribute, and reduce care work. Ensure that women have access to the property, including house and land. Now, this is the new, actually, as you must be knowing, some law came out, like they have the full right, girls and women have the full right in their ancestral property as well. So this is the time of change, not the chance. So we need to take care of this, whatever is available for us in the surrounding, in the laws, in the atmosphere, or in our family. So I'm really thankful to you all. As you can see here, we are from the Swasti Sukham Care Foundation. Here all the information, and we are going to share our website as well as in the group. So you can just visit our website www.swastisukham.org and share. You can share, you can ask any questions, you can connect me directly. I will be really grateful and really thankful to you all. So thank you all for patience hearing and supporting us in making Swasti Sukham Care Foundation strong.
Girl is the nation pride. She is the future. Empowering girl or your girl child or everyone's girl child is empowering our future or your future. Thank you. On nutrition and diet, on dietary needs that a girl needs. Now, I guess we have, now let me see how attentive you all have been when ma'am was discussing about the dietary needs and all. And, you know, to check your presence during that session, I will call dietitian Anu for a quick quiz. Okay, a dietetic quiz for you guys. So can I have Anu, please? Yeah, yes, ma'am. I'm just starting. I'm sharing my screen. My screen is now visible to all. Yes. This is the first question. I look green. I'm red. When you open me, what it is red, but what you spread out is black. Now time start. So in chat window, please, everyone can write. Everyone, please reply in the chat box. Our team is not allowed to reply, please. अपनी टीम अगर रिप्लाई करेगी तो बाकी सब कैसे करेंगे? Now you may check it's watermelon. Everyone loves me, therefore when they cut me, they cry. Guess my name. This is the third one. I can make cakes, bread, and toast. Why? What is my name? Now is the fourth one. My name is my color and my color is my name. Who am I? I hope ki, everyone is writing down in the chat box, right? Actually, I'm not able to see. Yeah, they are. I can't live alone. Guess my name. Now time start.
I have golden hair. I have millions of children under my green dress. Who am I? Now, seventh one, I'm hot. I have a country to my name. Can you tell my name? I am a bird, I am a fruit, and I am a person. What am I? I'm fast, therefore everyone loves me. What am I? This is very interesting. I hope कि इसका आंसर तो पहले ही आ जाएगा सारा. I am past, not present. A is my last alphabet. Who am I? It's very interesting. Fantastic. Thank you, Anu. Thank you, ma'am, and thank you all the participants over here. I hope you all enjoyed the quiz. Yes, Anu, it was really wonderful. Or Dr. Ragini, you were saying again and again, replying the answers. I know you are knowing it all. You're the teacher. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you very much. And Dr. Alka has also joined us, Swapnali. Oh, okay. She's also with us. Okay. Good morning, Alka ma'am. Hello. Hello. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning. Yeah. Ma'am, would you like to please grace our occasion? Dr. Alka Goel, I would just like to introduce her. She's a professor and dean, College of Home Science at J.B. Pant University. She's been associated with us. Like for last year also, she was with us and she inaugurated our Girl Child Week that day. And please, ma'am, would you please grace this occasion also for us? Just Thank you so much. Thank you so much. So I am very much here. And as Archana told me to be here for this inaugural function of your organized by this Swasti Sukham Care Foundation. And indeed, it's a matter of delight for me that to be a part of this National Girl Child Day celebration. And I really appreciate the efforts taken by the Swasti Sukham Care Foundation with this regard and other things also. They used to take up from time to time. And as we all know that girl child, that is the most precious thing on this earth, because so many things are associated with it. So the Swasti Sukham, today they have related it with the nutrition and health,
the behavior change, then the other some event regarding this prevention from cancer, laws and rights related to the girl child, etc. So in this regard, just a few lines I would like to say that as you must all, most of you must be knowing that Ministry of Women and Child Development, they initiated to celebrate National Girl Child Day with the aim to create awareness regarding gender-based discrimination, which the girl child faces in our society. It is not only in India, rather, it's almost a global problem, I should say. But we need to focus in our country so that we can eradicate this kind of problem. And in order to improve the condition of girls, the Indian government and Ministry of Women and Child Development, they took an initiative and introduced the National Girl Child Day every year, that is on the January 24th. So India observes its National Girl Child Day, and the main aim to celebrate this day, that is to create awareness regarding the rights of the girl child, also to emphasize the importance of girl education, health of girl child, and as well the difficulties they face, like the female infanticide, gender inequality, and also the physical abuse. In spite of coming a long way in the matter of technology, industries, and infrastructure, our country has changed little when we talk about the challenges faced by the adolescent girls each day. One of the most pressing issues, that is aspect to access to proper education. Many girls are compelled to face gender discrimination, lack of support from families, and perennial patriarchy, which sadly still exists in many rural parts of India. A survey was conducted among 7,200 teens during the last year, when girls spent most of the time on household chores. That was the observation. And researchers also showed that only 22% of the girls surveyed, they knew how to work on online learning platforms. Today we talk about the online teaching, online classes. Website डाल दो और Google Form. So in this regard, this is really very pathetic when we come about the real data, that only 22% of girls, they knew about this. Most researchers, they agree that young girls have a higher chance of being subjected to domestic work and early marriage if they don't have formal schooling. This must come as an eye-opener for the country and the government. I believe that efforts, initiatives, and programs that are driven by the aim of eradicating traditional practices and patriarchy, so that quality of education can be encouraged. I think so. In the last, I think ensuring safety, prosperity, and empowerment of women, that will lead to healthy society. Thank you, one and all. Thank you. Thank you very much, ma'am, for enlightening us. And आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और signal की भी बहुत issues थे. Still, ma'am tried to connect with us and share our blessings on. Since long, I have attached with ma'am since 1986, and she's still with her, showering blessings, guiding me, and she is my actually role model for me. How to live, how to manage your life, and how to be a success in your life. Thank you very much, ma'am, for joining us.
Thank you, Archana. Thank you. I'm sorry because No, of it's this. nahi, ma'am. yeah. It's okay. Network issues and health, it's not in our hand. Suddenly came out. Thanks a lot, ma'am. Okay. Thank you for Oh, time. welcome. Please continue. One more beautiful lady. She is Dr. Smita. Okay, so she's a dentist by profession and a poetess by heart. She's a proud mother of 3 toddlers. And because of her extraordinary love for life and nature, she always stole time for writing poems. Her poems are always inspiring. Her poem graced various international and national platforms. She published a collection of poems as Madhur Meera Sansar. And we are definitely really obliged, and it's our क्या कहते हैं खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हो आज, Dr. Smita. So she's with us to share her views on girl in a modest and sweet voice. Welcome, Doctor. Thank you so much. Thank you so much for adding and joining this Swati Sukham. Actually, I have 3 kids, but I always used to busy myself with something like that is creative and जो मतलब मेरे मन को भी जो अच्छा लगे, तो मैं दिन भर अपने बच्चों के साथ एंगेज रहती हूँ. एंड आई यूज टू लाइक मैं मॉर्निंग के 2 आवर्स निकालती हूँ जिसमें मैं सिर्फ अपने मन का करती हूँ. उनके उठने से पहले ये काम करती हूँ. तो आई हैव स्टार्टेड दीज थिंग्स ड्यूरिंग कोविड ओनली. Just 2 years has passed with the dentistry. The long year has passed, but with the write-ups and sahit, just 2 years has passed. मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको बेटी पर. बेटी तुम विश्वास हो मेरा, अर्थ जीवन को देती धरा की अंक धारिणी. अर्थ जीवन को देती धरा की अंक धारिणी. अंक धारिणी का मतलब होता है शरीर धारण करने वाली. उर अंतस की पीड़ा हरती बेटियां जगत तारिणी. तुम गंगा की धारा बनकर नित्य प्रतिदिन बढ़ा करो. तुम गंगा की धारा बनकर नित्य प्रतिदिन बढ़ा करो. और कभी हवा बनकर हिम की चोटी पर चढ़ा करो. और कभी हवा बनकर हिम की चोटी पर चढ़ा करो. विष को पीकर भी तुम अमृत कलश भरा करो. पीकर भी अमृत कलश भरा करो. बेटी तुम विश्वास हो मेरा, बेटी तुम विश्वास हो मेरा. इस जग में कुछ बड़ा करो, इस जग में कुछ बड़ा करो. 2-4 और पंक्तियां हैं. एक छोटी सी कविता और है बेटी पर. बिटिया मेरी मेरी लाडली संसार है मेरा. बिटिया मेरी मेरी लाडली संसार है मेरा. उसी से साँझ है मेरी, उससे है मेरा सवेरा. फूलों की महक है वो, खुशियों की है डोली. होली का रंग है वो, दिवाली की रंगोली. दामन मेरा था खाली, भर दी मेरी झोली. बिटिया मेरी मेरी लाडली संसार है मेरा. उसी से साँझ है मेरी, उससे है सवेरा. रातों को जाग जाग कर सेवा मेरा करती है. हर काम में है ध्यान वो, धीरज बरा धरती है. टूटे घरौंदों को मेरे हाथों से सजाती. बिटिया मेरी मेरी लाडली संसार है मेरा. उसी से साँझ है मेरी, उससे है सवेरा. उसी से साँझ है मेरी, उससे है सवेरा. थैंक यू सो मच. Wonderful, wonderful, ma'am. It was really nice to hear it. And you are an awesome singer as well. Yeah, your voice is really nice and so soothing. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot, Dr. Smita. Definitely, we are nearby, so definitely we'll meet. And we will try to have you on the offline board as well. Thanks a lot for joining us. Thanks to you all. Thank you. Okay, so Dr. Dhananjaya ma'am has joined in, ma'am. Now, Dr. Ragini's lecture is there, right?
Yeah, okay. Yes, yeah, Doctor. On behalf of Dr. Dhananjay, Dr. Bhavna Sharma is there. She is going to deliver the lecture. Okay. Yeah, thank you. Yeah, sure. So now let us welcome Dr. Ragini Mishra. She's Assistant Professor, Human Development and Family Studies at GVPUAT Pantnagar. She's also associated with Swasti Sukham since a long time, and she's also graced the occasion and given her tidbits for us and shared her experience and her knowledge. So please, ma'am. Thank you so much, ma'am. Good afternoon to everyone present over here. Ma'am, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your screen is trying to visible, but only black is coming. I'm trying it, ma'am. Yeah, no problem, ma'am. Arnath. And our main aim is elimination of cervical cancer. Cervical cancer ये ladies में होता है. Shall I be talking in English or Hindi भी use कर सकती हूँ बीच में? Whatever suits you, ma'am. Okay, so English is fine, right? Sure. Okay, so cervical cancer के बारे में हम will be understanding in a very short time. So let me just introduce what we do in our NGO, Cancer Patient Aid Association. Basically, we give total management of cancer to the patients. So be it awareness, going towards early detection, then patient management by giving them care, any support, getting them early appointments, giving them medicines. Then after that, rehabilitation is also done, because most of the time cancer patients lose their job and families in a big crisis. So हमारी NGO में हम rehabilitation भी करते हैं. Besides that, advocacy अगर कुछ चाहिए patients को, वो भी हम support करते हैं. और cancer research तो थोड़ा बहुत साथ में चलता ही रहता है. So let's not delay, and let me just tell you that cancer burden in India is almost 7.8% of the global cases hai. So it's a very high number. And agar hum look at the world cases, there are 19.1 million cancer patients are there, and by 2025 it is going to be 20 million. Or in that scenario, where do India stand? India mein there are cases of 1.354 million. So it is 7.8% of the global cases. In Asia, there are 15 new cancer patients are detected, and there are more than 50% lead towards death. So this happens because the diagnosis is happening at very late stage. And अगर हम IARC एक institute है international, उनके figures देखें worldwide, so 1 in 5 males and 1 in 6 males they develop cancer. And अगर ये cases हम देखें तो 1 in 8 males and 1 in 11 females they die due to cancer, which is again due to the reason because बहुत late diagnosis होता है. Now let's talk about cervical cancer scenario. So there is one agency, GloboCan, which gives cancer cases worldwide in few numbers of years, like 2018, 2020. So if we look at the incident in India, there are 123,992 cases are detected in India, which is very high compared to other countries, Western worlds. And इसमें से भी mortality rate is so high, 77,000 women die because of cervical cancer. Cervical cancer है क्या? Actually, it is a cervical cancer is basically गर्भाशय के मुख का कैंसर कहा जाता है. So ये basically woman का ही कैंसर है और prevent हम कर सकते हैं. So in my next subsequent slides, I will take you through how we can prevent it and how we can save our lives.
सर्वाइकल कैंसर अगर अभी हमने बताया था कि आपको इंडिया में 1,23,992 केसेस होते हैं. अगर वर्ल्ड वाइड हम कंपेयर करें तो यूएसए में इट्स 12,822 cases. When you look at UK number, it's just 2,650. And Australia में तो it's only 912 yearly. So if we look at Norway, it's 290 only. So imagine where we have 1,23,992 cases. Uske compare में, the worldwide cases are just figures of in 3 or in 4, at the most 5. So we have to really find out what is the reason, how can we prevent it. If we get the patients diagnosed in early stages, then there are chances of 80% we can save their lives. And around 469.1 million Indian women are at risk of cervical cancer. So it is the second most common cancer found in Indian women. So first one is breast cancer. So उसके लिए एक अलग सेशन लिया होगा. तो आज हम सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के ही बारे में बात करते हैं. It is basically caused by human papilloma virus. अभी कोविड के बाद तो now everyone knows about viruses. And ये virus sexually transmitted है. And this is the cancer which can be, it is the one of the most common preventable cancer hai. So if you think about cancer, you will say that, oh, cancer yani there is a death certificate, but yahan pe the situation is different. Cervical cancer can be prevented by means of HPV vaccination, and early age में अगर आप screening procedures follow करते हैं आपके गायनेक थ्रू, like HPV DNA PCR testing, PAP testing, VIA testing, ये सब procedures हैं जिसके through we can find out whether the virus is infected our cervix and whether it's leading to cervical cancer or not. So यहाँ ये screen पर you can see beautiful picture of the virus, though it looks beautiful, but it's a menace, right? कोविड का भी वायरस आपने देखा ही होगा, तो वैसा ही एक वायरस है जिसकी खोज डॉक्टर प्रोफेसर ज़ूरहाउसन में की थी, and he won a Nobel prize for that because उनके ये डिस्कवरी से पता चला कि cervical cancer is caused by human papilloma virus only. And if we detect it at an early stage, there is a high cure rate. The rate increases of the cure. And generally 80% of women are found, they find human papilloma virus at various stages of their life. But depending on the immunity, whether it causes damage or not. So it's very important to undergo screening at early age and carry out HPV vaccination in the girl children. So, okay. So WHO का नाम तो आपने सबने ही अभी जाना होगा. COVID has made lot of things, scientific terms बहुत ही easy कर दी है. So World Health Organization has recommended that HPV vaccination should be given to the girl child in the age of 9 to 15. And in the higher age also, 18 and to 45 also, WHO recommends that ladies also should undergo and take HPV vaccination. ये जो regulations हुई थी, 194 countries have agreed to do for the WHO recommendation. And in that, it is also part. So it's very important to spread awareness. Taking vaccine for HPV is very important. Now, people shouldn't feel
ahead of taking vaccine. After taking vaccines for COVID, HPV vaccine is also one of the kinds. So it's not a big deal nowadays. It's how do we spread awareness for cervical cancer? Either through awareness, conducting vaccination camps and screening camps. So as I told you, Indian females have, it is the second most common cancer. So it's very, very important to know whether you are infected with cervical cancer, HPV or not. So there are two HPV DNA testing and we generally do with the high-end testing for hybrid capture assay. So any girl above, any lady above who undergoes sexual activity, female of 25 years and above, there should be systematic and organized screening for HPV should be part of your regular profile. Like we do a lot of blood tests regularly. So we should be doing HPV screening also regularly, and that you should be meeting your gynecologist. And HPV vaccination should start in the girls in the age of 9 to 18 years and women for the age of 18 to 45 years. So there are two vaccines available, and these vaccines are very efficacious. And worldwide, if you see, around 350 million doses are administered. And like you must have heard or you must have seen that while taking COVID, you have a lot of side effects also, like you get fever, some hand pains and other, you feel very sleepy also. But HPV vaccine has no adverse effects at all. Like you really don't feel anything. So it's very efficacious. Like I said, there are two types of vaccines are available in India. Merck Sharp Dohme is promoting Gardasil and GSK Cervarix. Gardasil is quadrivalent, nanovalent. There are two types of vaccines available. What do you mean by quadrivalent? Like COVID के आपको पता है कि इतने सारे variants आ गए हैं. So HPV Gardasil में quadrivalent यानी there are 4 different types of viruses are attenuated and that is effective against that HPV virus. So HPV में भी human papilloma virus में भी there are different types of subtypes, like HPV 16 are oncogenic, HPV 6 and 11 are non-oncogenic, and they causes warts. So ये 4 viruses against की जो vaccine है वो quadrivalent है जो Gardasil में है, and Cervarix जो GSK is promoting is a bivalent vaccine which is active, which is effective against HPV 16 and 18, and they are the oncogenic viruses which causes cancer. So let me tell you how many doses are important for the various age groups. So यहाँ पे age group is important, like girl children in the age of 9 to 18, 2 doses are given. Dose 1 is given at the day 1, and dose 2 after 6 months of interval. And the ladies in the age of 18 to 45 years, 3 doses are given. Dose 1 again at the day 1, and dose 2 in the month between 1 and 2 month of interval. Dose 3, 6 to 12, between 6 to 12 month of interval. These guidelines are given by WHO and different various studies which are being conducted since the time of its launch. So we have to keep updating our knowledge and follow the guidelines. So this is the latest guideline. And it's, again, I said it's very safe and efficacious. It's very effective and there are no serious adverse reactions.
Only thing is that pregnant women shouldn't be taking this vaccine. They have to speak to their gynec and plan accordingly if they wish to take the vaccine. Okay, so HPV causes cervical cancer. You have to keep this in mind and take the precautions accordingly. So far, since 2018 and till date, we have conducted many camps at different locations in Maharashtra. Our sponsors, the sponsors who gives us funds, they have requirement to do camps in Maharashtra. But if anyone wants to find out and conduct any camps, we can help them out and to carry out the vaccination camps in poor children or help them out. So this is the picture of Ralegan city. I hope you all have heard about Anna Hazare, a very famous social activist. He stays in Ralegan city, that's his village. So he had invited us to conduct HPV vaccination in his area. And we really got a lot of response from the parents and the kids. And we did 676 vaccine doses were given to the kids there. And we followed up with the second dose, and the compliance was also very high, around 98%. So it's very important to take the second dose to complete the requirement. And the coordinators also make sure that all the kids are coming back to take the second doses. So the age of the kid is 9 to 18, and they are minors. So we take the consent form and take necessary information from them, and then the vaccination is given. So all this thing is done through a school. So principals, school teachers, everyone's are involved in this activity. So this was the story. This is the general story of any camp which is conducted by us. All these vaccines are given free of cost to them. And basically we try to go to the rural area, because I'm sure in urban area also, many of us are still unaware about HPV vaccines. So hopefully government takes some stand and make HPV vaccine also mandatory in the vaccine card, so that we ladies are prevented for getting cervical cancer. I mentioned that cervical cancer is HPV is transferable through the sexual activity. So if you have multiple partners, the chances are more. So there were some inhibitions of some political parties, why we have to give vaccine. That means that our girls will become more bold and all that. So which is kind of very illogical. So we had tried to convince people and make them understand that no, that doesn't give the green signal to go, and the girl can become bold and go ahead and do anything. It's just a preventive step ahead. So let me tell you a story about Dindrud, which is there in Ahmednagar, Maharashtra. This was our first camp, and we started with that. And the invitation came from our chief minister, that time was Mr. Fadnavis. Through his office, we conducted the camp, and 800 vaccine doses were given. And every time first dose is given, so we have to plan accordingly the second dose also. So initially when the vaccination is planned, so general awareness is given to the parents and the kids, why should we take it. And then the vaccination day is decided, and there are paramedic
staff available there, nurses, doctors who administer these vaccines. These vaccines have to be transferred in cold chain. So we make sure that it is transferred properly and administered by qualified staff. After the vaccination, the kids are supposed to sit in an observation area for half an hour, just to check whether there is no adverse effect or any psychological, because of the psychological effect, they are feeling giddy or anything else. So this was done in Solapur, again in Maharashtra. You can see huge number of kids were there. This is the registration area. And here the vaccination is given by the Anganwadi nurse. And happy kids, you can see all this after administration of the vaccine. So again, this was again in Ahmednagar, Maharashtra, Majilgaon, one of the village there. So first the all ladies, sorry, all ladies were made aware of the why you have to give this vaccine to your kid. And then this school principal very happy to get her school kids vaccinated. These are the team of the nurses, and here the school children, teachers are so happy that this event is happening to their school. So same story, then because of the pandemic, we couldn't go to the rural area. So we started doing this in the Ma'am, class 94, yes. 1,000 vaccine doses were given in Vileparle, Mumbai, and all needy girls were contacted by one NGO, and they arranged this camp. So this was a model village. Hivre Bazaar is considered as a model village in Maharashtra. A lot of things have happened there, and they took the initiative to conduct a camp and get the school kids vaccinated. This was again in the, this was a very different story. This is in a Snehalay NGO who deals with the sexual workers and their kids. So they, the kids are, it's an orphanage also. The kids stay there, study there. Their mothers are somewhere else. They also come back to meet them. And they take very proper care of these kids. So there they had called us, and we conducted the vaccination camp for these kids. Palghar is close to Mumbai. This is the story during after the pandemic. We couldn't travel to the rural area. So we started looking for options at different pockets where there is a real need in Mumbai around it. So this was again one NGO where the kids are staying there and studying, and their parents are very rural area, in the rural area. So there also we administered 400 vaccine doses. This is again in Andheri. People had contacted to different localities and called people, organized it, and we gave 1,814 vaccination doses were given. This was in Panvel, a school where a college where they had contacted different schools around, and 1,000 vaccine doses were given for the first dose. We have to do the second dose for these kids. So yeah, I'm sure you must have understood what is the importance of cervical cancer prevention, and we can do it all together with the help of vaccination and timely screening. So thank you so much giving me this opportunity. So if there are any queries which you would like to ask, I'm happy to answer.
Hello. Hello, yeah, Bhavna ma'am. Am I audible? Yeah. Sorry. Ma'am, So yes, please tell me. ma'am, actually my query is that ki a part of Maharashtra, can you serve any other part of India also? We can help. Generally, what happens, these funds are given through CSR, and they have requirement to fulfill in pockets of Maharashtra. But if you have some funds or you organize funds in your area, we can definitely help you out conducting camps. We can come or guide you. You're talking from where, ma'am? Actually, I'm staying in Maharashtra only, Thane only, but in Rajasthan, Haha. yeah, we have a girls' school in my village, and Sure. actually it's run by Rajasthan government, but donated by our family only. Haha. So I'm thinking can I ask for girl child? No, ma'am. What we can do is like there are many Rotary clubs, Lions clubs, some corporate companies. They give a lot of funds. So if you have funds, if you gather some funds, we can definitely help you out planning vaccination camp. Okay, ma'am. We can do so. Archana and ma'am, can you please share my number to them? Yes, ma'am. Definitely will, ma'am. She's also part of our team and nutritionist and diabetes educator from Okay. Maharashtra. And Okay. and I was telling you, na, we will plan in Yes, Maharashtra yes. some camp, and they are the Yeah. leading people like Radhika, Neha, and Right. Swapnali is there, and all three are from Mumbai itself. And our another co-founder and director, Sony, is from Pune itself. So they are nearby people. And definitely we are in the process, and we will try to have some camp with you in the Sure, Maharashtra sure. itself. Yeah. And Sure, we'll that try, will be great. we will connect the Delhi team as well, right, ma'am? So that we can Okay. start work here also. Yeah, Of your PTA. definitely. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Actually, it is really very, very motivating. Yeah, and Yes. worst part is that forget about the rural people. Even urban ladies are not aware of this. Exactly. And Yes, ma'am. so it's very important. Like last year, we had conducted cancer prevention awareness camp, online session. So we are trying our best to reach out to maximum people. And we also offer, okay, if you can't take vaccine, come to our camp, we can do it for you also. So very truly said. Bhavna, rather we have organized one camp, I think 4 or 5 years back with the gynecologist and one MR team. That team has approached us like you can plan a camp for cervical vaccine, because people are like you said, na, one point that is very much important. Like if you are doing you are not related with one person only, you are living with another many partners, then only it is required. At that time we have faced this thing, ma'am, why should we go? We are not that type of person. But this is not about the celibacy, this is about the your strength, your inner power. Yes, so this is very important. I have found that day, like people are thinking like we are not in that area and we are not in that group, why should we go for the vaccination? Right. So this is a very bad impact of the vaccination. Yes. Right? Yeah. Thank you very much. So much. Thank you. Thank you. Thanks a lot. And convey my regard, our team regard rather, and blessings for Dr. Dhananjay as well. So that she can get well soon as early as possible, and his family members all. Sure. Thank you, ma'am. And I really apologize, ma'am. No, not at all. Yeah, you are there. And on behalf of her, and you are also director of the team. So it's really our honor to have you here. Thank you so much for giving us you only we have connected to Dhananjay, Dr. Dhananjay, right? Yes. Yeah. Thanks to Art of Living. Right. Thank you so much. We'll connect again. Sure. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was very. Thank you so much. Thank you. Okay, so we go on to the next session now. Now, can we call Nidhi so that she can have a poll?
Okay, okay. Or just, I think Dr. Ragini, are you there? Or we can have Yes, this. ma'am. So shall we start with the presentation first? Yes, ma'am. Then we'll take the Thank you so much, questions. ma'am. Yeah, right. आप लोग अगर पोल लेना चाहते तो बताएं, बोर नहीं हुए ज्यादा तो. I think ये काफी informative था. I mean, हाँ, लोग yes. would Right. be more, knowledgeable. I mean, Right, right, right. what we are, because as Dr. rightly said, like when I talk to my friends also, many Yes. of them are little adverse of taking, for their kids the vaccination. They're like, क्या लेने की जरूरत है? Really जरूरत है क्या? Yes. Like हम लोग pediatrician से पूछ लेते हैं, because after the session जो हम लोगों ने last year किया था, मैंने सबको बोला था कि ये काफी important है और हमें देना है. पर people were like, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है. Exactly. काफी Exactly. adverse है, कि क्या side effects होंगे, क्या होगा. हाँ. तो वो Very, सब yeah. questions है. So even, of course, not a rural thing, even the urban moms are not aware about it. Yes. Shall we go ahead with Dr. Ragini? Yep. Thank you so much, ma'am. Anu, are you presenting the slide? Yes, ma'am. Just a second. Thanks. Thank you so much, ma'am. Swapnali, you can go ahead with the Dr. Ragini's introduction and invite her. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving me time. Good afternoon to all the faculty members, dignitaries who are present over here. अब इतनी सारी नॉलेजेबल बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि हम साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे थोड़ी सी बात करेंगे. अबाउट द वुमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं. तो अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. बिफोर दैट, I am thankful to the members of Swasti Sukham Foundation for providing me opportunity for delivering this lecture on the occasion of Girl Child Day. Before we start our psychological problems of women faced during their life cycle, I need to focus and bring your attention on a poem first. Then we'll उसको हम dissect करेंगे कि क्यों इस poem को हमने use किया है यहाँ पे. The poem is about, ma'am, can you bring the next slide, please? अब पोएम है अबाउट द वुमेन. आई एम सेइंग, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जोश हूँ, त्याग हूँ, सहनशीलता की मूर्ति हूँ मैं. बेटी, बहन, पत्नी, माँ, हर रूप में ढल जाती हूँ मैं. घर तक सीमित नहीं, चलाने को तो देश भी चलाती हूँ मैं. नदी हूँ कि पत्थरों को चीर कर रास्ता बना देती हूँ मैं. इस समाज में पुरुषों से कोई लड़ाई नहीं है, उनके उसूलों से है जो मुझ पे लागू हुए. अपनी पहचान बना के अपना हक ही तो मांगती हूँ मैं. मैं हूँ तो यह संसार है, यह जहान खूबसूरत बनाती हूँ मैं. हाँ, एक औरत हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं. सिर्फ पोएम, यहाँ पे पोएम, ये पोएम इतनी सारी चीजों के बारे में बात करे कि मैं एक औरत हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ. इट्स अबाउट बीइंग साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ अ वुमेन, portraying about the self-worth, self-image, self-identity. I can do anything. I am a super woman. और एक औरत की लाइफ मेरे ख्याल से सुपर वुमेन जैसी ही होती है, जिन्हें हर काम डबल डोज में करना होता है. डबल आपके पास डुअल वर्डनिंग है, डबल काम है. औरों की अपेक्षा काम का जो सिनेरियो हर कंटेक्स्ट में डबल है. चाहे आप बेटी के रूप में हो, आप माँ के रूप में हो, पूरी लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो वुमेन के पास वर्कलोड हर कंटेक्स्ट में, हर एज में ज्यादा है. अभी तक हम बात कर रहे थे गर्ल चाइल्ड डे की बात हो रही है. अगर एक वुमेन का लाइफ साइकिल हम देखें, अगर वो गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड से बच जाती हैं, फिर अर्ली इयर्स में एजुकेशन, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल जाता है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स ईयर उनकी लाइफ का शुरू होता है, वो है प्यूबर्टी से ओल्ड एज तक का. रिप्रोडक्टिव ईयर्स की हम बात कर रहे हैं. जैसे ही रिप्रोडक्टिव ईयर्स वुमेन के स्टार्ट होते हैं, दे ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे आपको अपनी सोशल आइडेंटिटी बनानी है. हम कह रहे हैं हम खूबसूरत हैं, जैसे ही आप प्यूबर्टी में आते हो तो सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी सोशल आइडेंटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड दैट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन प्यूबर्टल गर्ल्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी मैरिज स्टेज में, यानी अर्ली एडल्टहुड की बात करते हैं. हम हमारा मैरिज डायमेंशन पे मूव करते हैं. अगेन मैरिज में जाते हैं, देन आपके साथ रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट होता है, उसकी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, देन इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, अबॉर्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स. उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको ढलना है, इसको सेव करना है, अपने आप को उससे एडजस्ट करना है, एंड आपको सोशल इश्यूज में अपने आप को सोशलाइज होते हुए
हर प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, इसलिए आपको सारे काम करना है। अलॉन्ग विद दैट, इफ वुमेन इज वर्किंग, दे हैव टू वर्क एंड मैनेज देयर वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल। अलॉन्ग विद दैट, वुमेन रिप्रोडक्टिव वर्क जो उन्हें करना है, उसके साथ उन्हें अपना लाइफ और वर्क का काम भी साथ में करना है। दैट इज अगेन कॉम्प्लेक्स इशू। उसके साथ और आगे हम 2 स्टेप अहेड बढ़ते हैं तो फिर और प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जाती है। आपकी लाइफस्टाइल एक बन जाती है, उसी लाइफस्टाइल में आपको जीते रहना है। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके इन लॉज, आपके रिलेटिव्स, उनको देखते हुए फिर अगेन एक स्टेज आती है, फिर आपको डिप्रेशन का स्टेज आता है, फिर उसके बाद लास्ट आती है इम्यूनोपॉजल स्टेज। फिर अगेन आप प्रॉब्लम में होते हैं। मेनोपॉज अपने आप में एक डिप्रेसिव स्टेज है। लास्ट स्टेज होती है एजिंग प्रोसेसेस की, हम बात करते हैं, एजिंग आती है अगेन। फिर से हेल्थ की मेमोरीज। तो मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, जहां पे ग्राफ बना हुआ है। ये एक पूरा लाइफ साइकिल का स्टेज है। जिन प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं कि वुमेन की लाइफ में जो ग्राफ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो ग्राफ है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है एंड एडल्टहुड तक उसी मोड में वो सारे प्रॉब्लम्स एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको टैकल करते हैं वुमेन को एजिंग प्रोसेसेस पे फिर एंड में पहुंचती है। तो हम बेसिक 4-5 पॉइंट्स जो ऊपर सबसे पैरामीटर में लिखे हैं, इन्फेंसी, प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी रिप्रोडक्टिव एज की बात करते हैं, क्लेमेट्रिक एज की एंड पोस्ट क्लेमेट्रिक एज की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं द प्यूबर्टल स्टेज। जैसे आपका मेंस्ट्रुअल प्रोसेसेस शुरू होते हैं, तो एक लड़की के साथ क्या होता है, सबसे पहले तो आप जिस पे काम कर रहे हैं मैम, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कितने ज्यादा मेंस्ट्रुअल मिथ्स अवेलेबल हैं घर में। पहले तो बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता कि आपको मेंस्ट्रुएशन आने वाली है, आपके प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इमर्ज हो रही हैं, तो अलॉन्ग विद दैट सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आएंगी। एक बच्चा उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होता साइकोलॉजिकली, सडनली वो फेज उसकी लाइफ में आता है, देन द गर्ल हैज टू मैनेज दैट चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से उसकी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस की वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग्स यानी कि सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलॉन्ग विद दैट ऑल फिजिकल चेंजेस बच्ची को फेस करने पड़ते हैं। और उसके साथ क्या होता है, क्योंकि इरिक्सन कहते हैं, दिस इज द फेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस से टैकल नहीं करना होता, अलॉन्ग विद दैट आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है, सोशल इमेज है, बॉडी इमेज है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। एक बच्ची का जैसे बॉडी चेंज होता है तो वो लोगों के साथ अपने जितने भी बॉडी मेजरमेंट्स के पर्सपेक्टिव है उनसे देखने लगती है। उसका आई सेल्फ और सोशल सेल्फ दोनों मिक्स हो जाता है, यानी कि मैं कैसी हूँ, क्या सोचती हूँ अपने बारे में, और दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, और दूसरों के जैसा एक एडल्ट जैसी दिखाई देती है वैसा बनने के लिए लोगों के जो मेजर्स बने हुए हैं बॉडी के, उस मेजर्स में खुद को ढालने के लिए बच्चे बहुत कोशिश करने लगते हैं। डाइटिंग शुरू कर देते हैं, लो कैलोरी डाइट शुरू कर देते हैं। देन एक जो कहते हैं हम डाइटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इस एज में, जो बच्चों को फेस करनी होती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि एक्सेसिव डाइटिंग कर देना, खाना नहीं खाना, बुलिमिया नर्वोसा यानी कि खाने के बाद वॉमिटिंग कर देना। तो जैसे ही वो फिजिकल चेंजेस का दौर शुरू होता है एक बच्चे की, तो उसकी सेल्फ इमेज ही सबसे पहले अफेक्ट हो जाती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, लोग मुझे इस रूप में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या मैं उस हीरोइन जैसी दिख रही हूँ, या अपनी मम्मी जैसी बहुत परफेक्ट दिख रही है, अपनी किसी दोस्त जैसी परफेक्ट दिख रही हूँ ना। वो दिखने के लिए जो उस पर मेंटल प्रेशर होता है कि मुझे ऐसा दिखना है, अच्छा लगना है, या मैं मोटी नहीं दिखूं, मैं पतली दिखूं, या मैं अप्रोप्रिएट दिखूं, मेरी बॉडी प्रोपोर्शन से एक्यूरेट हो, उस चक्कर में जो बच्चा परेशान होता है वो बॉडी, उसके साथ मूड डिसऑर्डर्स तो आते ही आते हैं, साथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी प्रमोट कर देते हैं। अगेन ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ लाइफ है, जब एक पेरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी, सबका रोल होता है कि एक बच्चे की उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करे। हमारे यहाँ जब हम साइकोलॉजी एक्सडीएफएस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एक चीज पढ़ाते हैं कि हर स्टेज में कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है, हैजार्ड्स लेके आती है। मीन्स अगर मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो चाहे बन सकती हूँ, लेकिन साथ में हैजार्ड भी है, क्योंकि मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है, तो मेरे पास बिल्कुल ऑप्शन है कि मैं जानूंगी कि मैं एक लड़की हूँ, एंड बीइंग अ गर्ल मेरे पास क्या सेक्सुअल पावर्स है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप, मेरे सोशल ग्रुप, मेरे आसपास के दोस्त के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, मैं किसी रॉन्ग डायरेक्शन में भी बहुत आराम से जा सकती हूँ। वो मेरे प्रेफरेंसेस है कि बॉडी में जो हमारा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है वो हमें किसी भी तरफ डेविएट कर सकता है। देयरफॉर वी नीड प्रॉपर गाइडेंस एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जब हमें सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ये प्यूबर्टी का पहला स्टेज वुमेन की लाइफ में सबसे कॉम्प्लेक्सिटी भरा होता है।
जैसे ही आप इमर्ज करने लगते हो, सेक्सुअलिटी मेजर्स आपके आने लगते हैं, यू आर प्रोन टू द सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंसेस, ईव टीजिंग। अगेन जब ये चीजें चेंज हो रहे होते, बच्चे की चेंजेस बॉडी में आ रहे होते, आपके सोसाइटी में जो इविल पीपल बैठे हुए हैं, कोई भी टीजिंग करके, कोई बाकी चीजों के थ्रू जब उन्हें इंस्टिगेट करता है, अगेन दैट अफेक्ट्स देयर साइकोलॉजी। वो अपने आप पे सेल्फ डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एक हमारी सोशल टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म, सेल्फ वर्थ, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ वर्थ। खुद को एक्सेप्ट कर पाना एज अ बीइंग अ गर्ल एक बच्चे के लिए पहले डिफिकल्ट होता है, फिर अगेन सेल्फ वर्थ, जब लोग उसको अब्यूज करने की कोशिश करते हैं या फिर ईव टीज करते हैं या फिर एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं, सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करते हैं, अगेन वो बच्चे के साइकोलॉजिकल डायमेंशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है, जो आने वाली एडल्टहुड लाइफ उसकी डैमेज हो सकती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस। तो वुमेन की पहली कॉम्प्लेक्स लाइफ इज प्यूबर्टी, दैट वी नीड टू फोकस ऑन साइकोलॉजिकल डायमेंशन। दूसरे डायमेंशन पे हम पहुंचते हैं जब हम सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। आफ्टर 18 years 20 years हमारी सेक्सुअल अटेनमेंट पूरी हो जाती है एंड वी हैव टू एंटर इन द मैरिज इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम एडल्ट हो चुके हैं, अभी हम एडल्टहुड में जाना है, और शादी होने के बाद दूसरा स्टेप ही रिप्रोडक्शन है, चाइल्ड बेयरिंग है, चाइल्ड रेयरिंग है। तो ये आपका काम आते ही जैसे मैरिज आएगी, देन यू हैव टू एडजस्ट विद द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द फैमिली के जो भी इन लॉज है उनके साथ आपको मैनेज करना। उस बच्चे के साथ जो भी, अगर वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर द सेक्सुअल थिंग्स, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, साइकोलॉजी उसकी अफेक्ट होगी एंड शी मे गेट इनटू द डिप्रेशन। अगेन दूसरा स्टेप आता है रिप्रोडक्शन का। अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इन बियरिंग द चाइल्ड, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डायमेंशन को डैमेज करता है। अबॉर्शंस अगर हो रहे हैं बार बार, अगेन दैट साइकोलॉजिकल डायमेंशन वुमेन का अफेक्ट होता है। दूसरा, फिर अबॉर्शन के बाद अगर इनफर्टिलिटी है किसी केस में, तो ये सारे रिप्रोडक्शन मेजर से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं, वो सारे वुमेन के साइकोलॉजिकल डायमेंशन को इस एज में बहुत ही बैडली इम्पैक्ट डालते हैं। अगर सक्सेसफुली आप इन डायमेंशंस को पूरा कर लेते हो, दूसरे डायमेंशन पे जैसे हम पहुंचते हैं, दैट इज द चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। पूरा एक मदर के ऊपर, पूरी, आप सब मदर्स हैं मेरे ख्याल से, तो आप सबको पता है कि एक मदर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे का खाना पीना, रहना, उसका देखभाल, उसको कहीं डैमेज नहीं हो। जब आप प्रेग्नेंट रहे होंगे और तब से लेकर के 6 years की लाइफ एक मदर की अपनी खुद नहीं होती, फिर वो सिर्फ बच्चे की लाइफ होती है, क्योंकि उसको एक सिंगल डैमेज, सिंगल इंजरी, सिंगल आपका जर्क प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपका सब कुछ प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गुजरी हो, उसके बाद अगर आपका बर्थ के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हो गई, तो बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशल नीड का आपका बच्चा हो सकता है ना, आपका प्रॉब्लम, आपका केयर देने का टाइम स्पैन बढ़ जाएगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आपकी लाइफ के, ताकि वो टाइम क्रूशियल होता है। उस टाइम क्रूशियल के बाद फिर आप उसकी न्यूट्रिशन, 1 साल तक आप उसको हाथ में लेके घूमते हो, ताकि उसे कहीं डैमेज नहीं हो, कोई ब्रेन इंजरी नहीं हो, कोई कहीं पे चोट ना लगे, ताकि वो रहे। तो आपकी लाइफ अगले 6 साल तक उसको स्टेबल बनाने के लिए, वो चल के उठ के स्कूल जाने तक का लायक हो जाए, वहां तक आपकी लाइफ पूरी उस पर डिवोटेड होती है। एक एग्जॉस्टिंग, एक आपका कैसा हो गया, लाइफ एग्जॉस्ट होने लगती है एक जैसी रूटीन जीते जीते। तो दूसरा डिप्रेसिव स्टेज, ये डिप्रेशन आपने मैरिज के टाइम पे पास आउट किया, प्रेगनेंसी तक, प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड बर्थ के बाद एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसके बाद जो आप लाइफ जीते हो, बच्चे को पालने में, उसकी केयर करने में, पूरा टाइम उसको डिवोट करने में, फिर वो टाइम अपने पति को नहीं दे पाने में, देन सेक्सुअल नीड्स आर देयर, वो फुलफिल नहीं होती, ना आपकी, आपके पति की, ना बाकी लोगों की। फिर आप काम भी, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारा वर्कलोड होता है आपके ऊपर, फैमिली का, एंड अगर आप वर्किंग हो तो डबल बर्डन आपके ऊपर है। वो सारा जो होता है पीरियड, दैट इज पोस्टपार्टम पीरियड, चाइल्ड बर्थ के बाद इस सब चीजों को मैनेज करना। फिर आता है बर्न आउट रिलेटेड डिप्रेशन। जब आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 year 15 year तक सेम लाइफ स्पैन जीते हैं, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस टाइम से, एंड दैट ब्रिंग्स डिप्रेशन इन योर लाइफ। तो वुमेन की लाइफ में अगेन एक डिप्रेशन का डोर ओपन है, जहां पे वो डिप्रेशन की फील्ड में जा सकते, डिप्रेशन उनको लग सकता है। देन अगेन आता है मेनोपॉजल डिप्रेशन। सारी प्रॉब्लम्स को आपने ओवरकम कर लिया है, लेकिन अगेन मेनोपॉजल ईयर्स 35 के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं किसी के लिए भी। देन मेनोपॉजल स्टेज आना अपने आप में ही एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है। वुमेन को लगता है वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है, उनका आने वाला टाइम दिक्कत हो सकता है। देन हार्मोनल चेंजेस अगेन डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी बॉडी को, तो उसके साथ सैडनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगता है। तो दैट इज मेनोपॉजल, जब यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बंद होने वाली है, दैट ब्रिंग्स अ प्रॉब्लम टू वुमेन्स लाइफ, दैट इज मेनोपॉजल डिप्रेशन। एंड लास्ट इज डिमेंशिया। इन सब बातों की अगर हम बात करें इनके बाद, अगेन जब आप एजिंग, तो सबके लिए कॉमन है,
आपका सारा डेंसिटी, बोन डेंसिटी, आपके ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका मेनोपॉज होगा, दैट ब्रिंग्स द हड्डियों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेके आता है वुमेन के लिए। ऑटोमेटिकली आपको हेल्थ और डिजीज ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, और जब आप प्रॉब्लम में होगे जिसको पूरा घर की देखभाल करनी है, तो ये प्रॉब्लम अपने आप में एक वुमेन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो काम पहले पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ कंट्रोल करते हुए पूरे घर पे करती थी, वो भी नहीं कर पा रही है। तो अगेन वो लाइफ सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज करने लगता है एक विमेन में। दूसरी विमेन का घर में आ जाना, अपना फैमिली से अपना कंट्रोल खोने लगना, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज, फिजिकल कैपेसिटीज कम हो रही हैं, तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स एन प्रॉब्लम फॉर अ ओल्ड लेडी एंड ओल्ड वुमेन। तो ये आपका लाइफ साइकिल है। मतलब वुमेन के लिए अगर मैं कहूँ, तो अगर हमने फर्स्ट 15 ईयर्स सर्वाइव कर लिया, इनफेटिसाइड, फोर्टिसाइड हमारा नहीं हुआ, हमें न्यूट्रिशन भी मिल गई, एजुकेशन भी मिल गई, लेकिन जैसे ही हमें डोसेस ईयर में एंटर कर Audible now. ओके मैम, तो आई वाज सेइंग कि अब इसका रूट कॉज जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रूट कॉज अगर कोई है इस प्रॉब्लम के पीछे, कि वुमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती है, उसके पीछे मुझे लगता है खुद वुमेन रीजन है। एक तो हम अपने एजुकेशन, जो चीजों पे हमें पता होना चाहिए, अपने फिजियोलॉजी के बारे में, अपनी साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, हम उस पर फोकस कम करते हैं। इससे हमारा पूरा केयर लेसनेस की जो हमारी हैबिट है टुवर्ड्स द फूड, टुवर्ड्स द फिजियोलॉजी, टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग मेंबर्स, अपने भाई के लिए, अपने पिताजी के लिए। हम लोग की आदत होती है पहले पापा मम्मी खाना खा ले, पापा खा ले, भाई खा ले, बेटा खा ले, देन हम अपने आप को लीस्ट। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होता है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। लेकिन और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जो है सबके लिए सिमिलर नहीं होती। जरूरी नहीं जो प्रेगनेंसी में आपको सिम्टम्स आए हैं वो दूसरे को भी आएंगे, जरूरी नहीं प्रेगनेंसी में पोस्टपार्टम जो इम्पैक्ट है वो आप पे जो आया है वो दूसरे पे भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई वुमेन अपनी प्रॉब्लम हमें बता रही है या वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि हमने फेस नहीं की, तो हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। हम लेस सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगेन हम दूसरे की प्रॉब्लम जब नहीं समझते हैं, बीइंग अ वुमेन, तो ये अगेन एक प्रॉब्लम है। तो ये वुमेन की प्रॉब्लम की जड़ हमें लगता है वुमेन है। अपना ध्यान नहीं रख के, अपने बारे में नहीं जान के, अपने बारे में केयरलेसनेस दिखा के अपने लिए डिजीज और प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल इश्यूज को खुद ही बुलाते हैं। देन अगर हम दूसरे वुमेन की बात कर रहे हैं, तो हमारा लेस सिंपैथेटिक होना, दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझ पाना, कई बार क्योंकि हमने फेस नहीं की है इसलिए नहीं समझ पाना, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर द अदर वुमेन। एंड दूसरों के टुवर्ड्स ज्यादा डिवोटेड रहना, बीइंग अ वुमेन, हमने कहा ना कि हम आज हर्षुल के थोड़ा सा चोट लग, हम कहते हैं हम जोश है, हम मर्यादा है, हम खुश रहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सुपर वुमेन। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, मीन्स कि अपने आप को नहीं, दूसरों के टुवर्ड्स, दूसरों के व्यूज, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे खुद को प्रिपेयर करके वर्क कर रहे हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। देन हमारी पेरेंट एंड फैमिली की हमने उनसे क्या जनरेशन बाय जनरेशन हमने क्या सीखा है, इसकी वजह से वुमेन्स प्रॉब्लम फेस कर रही है। क्योंकि हमारे जनरेशन में जो हमको मिला है कि हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्या चीज मिलनी चाहिए, अपने पेरेंट्स और लोगों को देख के सीखते हैं। तो वो जो मिला है कई बार हम उसे चेंज नहीं करते, दैट इज अ प्रॉब्लम जो जनरेशंस में मिलता रहता है हमें। एंड कम्युनिटी एंड द कल्चर, हम कहाँ रहते हैं, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और क्या क्या उनसे कितना ज्यादा उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे है, क्या हम रूल ब्रेकर्स है, क्या हम उसको चेंज करके जो गलत है सही करने का कोशिश करते हैं, नहीं करते। क्योंकि हर कोई अपने कल्चर और अपनी सोसाइटी से इम्बाइब्ड होता है, उसमें एक्सेप्टेड रहना चाहता है, तो अगेन उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये रूट कॉजेज है मेरे यहाँ से जो समराइज करने की कोशिश की है मैंने। मुझे लगता है सोल्यूशंस भी यही हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सोल्यूशंस मुझे लगता है ये कि वुमेन्स का अवेयरनेस हो टुवर्ड्स देमसेल्फ, कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे, वी नीड टू एजुकेट। मेरे ख्याल से मेरे गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स, आप सभी एनजीओज और बहुत सारे लोग इस तरह के इनिशिएटिव ऑलरेडी ले रहे हैं कि बच्चों की फिजियोलॉजी पे की एक्सेप्टेंस बढ़े, वो अपने आप को समझें, उनका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम मेट आउट हो सके। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू भी और खुद भी। तो हम खुद भी अपने लिए जितना अवेयर होंगे, हमारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है 50% कम हो जाती हैं। देन सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी जब हम एक गर्ल है, हमें जिन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना है, हमें उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आज की सिचुएशन जो भी है उसको हम समझें, उसको एक्सेप्ट करें, ताकि और अपना सेल्फ वर्थ, मतलब हम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे बाकी लोग हैं समाज में, मेन है या फिर कोई भी घर का सदस्य है, उसके इक्वली आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपकी एक वर्थ है, आपके बिना वो काम नहीं हो सकता, ये समझने की जरूरत है। देन
एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑब्वियसली उस पर गवर्नमेंट हर कोई काम कर रहा है कि जितना एजुकेटेड आप रहोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो अवेयरनेस आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देन राइट्स एंड लॉज के बारे में भी जानना कि आपके भी कुछ राइट्स एंड अवेयरनेस है। मेनी टाइम्स हम प्रेशर में और प्रॉब्लम में इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हमारा राइट क्या है, और हमें उससे जुड़े हुए लॉज भी नहीं पता होते, और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही झेल रहे होते हैं, चाहे सेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई हो, सेक्सुअल अब्यूज से जुड़ी हुई हो, या फैमिली में आपका मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम जानते नहीं और उससे निकलने की कोशिश नहीं करते, तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। देन पेरेंटल एजुकेशन की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है अगर हमारी लाइफ को कोई सुधार सकता है, विमेन की लाइफ को जो सबसे अच्छा बना सकता है वो है पेरेंट्स। तो पेरेंटल एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स को ये समझा पाना अपने बच्चे को कि उसकी जो लाइफ है उसकी है, वो इम्पोर्टेंट है, और किन मायनों में उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्यूचर में बीइंग अ गर्ल और बॉय क्या है, ये पेरेंट्स का बहुत, जितना ही हम पेरेंट्स को एजुकेट करके रखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे जो आपने फेस की है, आपका बच्चा नहीं फेस करे, तो आपको ये अवेयरनेस अपने बच्चे में डालनी चाहिए और उसको इतना एम्पावर्ड बनाना चाहिए बीइंग अ गर्ल कि उससे ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़े। तो पेरेंटल एजुकेशन मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका एजुकेशन, उनकी न्यूट्रिशन, उनको भी राइट्स एंड लॉज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उन सब के लिए जरूरी है कि उनमें भी अवेयरनेस, एजुकेशन एंड राइट्स एंड लॉज के बारे में नॉलेज और वो अवेयरनेस फैलाई जाए। इससे हमारे साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव्स है उनको मीट आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ज्यादातर वो हेल्थ और एजुकेशन को मीट आउट करने के लिए होते हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि साइकोलॉजी, आपके पास अगर अच्छा खाना है, आपका अच्छा पहनने को भी है और आपका बहुत अच्छा घर भी है, अगर आप हैप्पी नहीं हो मेरे ख्याल से तो वो कोई भी चीज का मीनिंग नहीं होता। तो साइकोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए कि अगर आप, क्योंकि जब तक आपका साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होगा आप कोई चीज यूज भी नहीं करना। जैसे आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे, कोई वैक्सीन नहीं लेना चाहता था तो हमें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना पड़ा कि आप वैक्सीन लो, वैक्सीन आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। तो हम वुमेन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, वुमेन की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे वुमेन की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, स्पेशली इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, when we need to focus and educate them about their rights, about the laws. They need to focus on the nutrition, they need to get aware about their physiology and psychology. जहां भी जरूरत हो वो डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेने की भी कोशिश करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को मीट आउट किया जा सके। मैंने जिन प्रॉब्लम्स को समराइज किया है उन्हें मैं बाद में कभी डिटेल में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, एडल्टहुड की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हमें कभी मौका दिया मैम ने जरूर मैं उस पर डिस्कस करना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच मैम। आई एम समराइजिंग दिस विद कि हम सच में वुमेन हैं और हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को मीट करने आउट करने की स्किल भी सिर्फ विमेन्स में ही है। उनकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को मीट आउट कर लेती है अगर वो चाहे तो इसीलिए हमारा साइकोलॉजिकल डायमेंशन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। और जितनी भी पोएम्स अभी आपने सुनी है कि मैं बेटी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो, पर अपने आप को इतना बर्डन मत दो कि अपनी एक्सेप्टेंस और सेल्फ वर्थ को आप भूल जाओ। उसको मेंटेन रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए लाइफ में काम करो ताकि आपकी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हमेशा जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम्स छोटी दिखाई देने लगेंगी और आप अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से एंजॉय करके लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम for providing me this opportunity for the lecture. Thank you, ma'am. It's our honor, ma'am, to have you here. And it was really wonderful, elaborated information. And I hope we will definitely take your services in future also. And we'll organize some camp as well in Pantnagar. I'm so sorry कि बहुत short of the time तो मैं किसी particular topic को मैंने focus नहीं किया, तो I thought कि सारा dimensions को बता दिया जाए। And जब next time कभी होगा तो specifically a specific age will be mentioned with all behavioral disorders, problems, symptoms, and how to tackle those problems. Thank you so much, definitely, ma'am. Thank you very much, ma'am. Women's Day is around the corner in next, I think March 1st we will do it. Some of the programs, then definitely we will have some more session with you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. It was very informative. Thank you so much. Aspects that जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, like हम लोगों को लगता है हाँ ये natural behavior है, you know, जो menopause आपने बात की, जो puberty बात की,
I don't think many people knew puberty ke waqt the adolescent girl actually goes under a lot of emotional changes as well, just not the physical ones. And, people just take it as a troubled teen or something like that. That is the name that we give to that stage. But it's actually just not that. They are themselves going through a lot of changes jo unko khud ko pata nahi hoti. Yes, ma'am. So it's really nice. I mean, I definitely want to have a word with you because I'm a teen parent right now. So I think I will definitely connect with you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, so now let's call on Nidhi. Nidhi, can we have the poll, please? Yeah. So everyone, be ready for the quiz competition here as well. So here the first question. National Girl Child Day is celebrated. When it is celebrated? On 24th March or December 12, May 31st and January 24. Everyone should answer this. Am I supposed to type in, Nidhi? Everyone done with first question? And the second one is... Nidhi, just wait. No one has... Nidhi, we are not able to select it. I mean, why is it this way? You're not able to. So guys, can you please, if you are not able to select this, then you can write down in the chat box. Yeah. I'm just starting it again. Let me see what is happening here. So National Girl Child Day, I hope everyone has answer. And International Girl Child Day is celebrated on October 11th October 2012. Shall we move on to the second question? Hope everyone. It is working, I think, now. No, ma'am. No, I don't know. I can't select it. Okay. Okay. Just write down the chat box. You can see the question, right? Yeah. Everyone, please try to put the answers in the chat box. Hope everyone have answered there in the chat box. Okay, next. So second question is, the National Girl Child Day was first observed in which year? It is 2002, 2004, 2008 or 2011? I think we can see the answers as well now. Yeah. Someone is able to answer the questions. Yes, ma'am. Yeah. 50%. Yeah, and the third. Yeah. I can just see the answer paper now, so I'm okay. OMG, how could you see the answer paper? Should I end the poll over here? We have the third question, right? Yeah. The third question is, what is the theme of the National Girl Child Day in 2021? So let me give you a hint. On that day, they have the Ministry of Culture have organized an event. That event was Umang Rangoli Utsav. So the answer is Digital Generation, Our Generation. This was the theme in 2021. And My Voice, A Common Future is the theme in 2022. And Empowering Girl Child for a Brighter Tomorrow is the theme on the year 2019. And what is the theme of this year? Can anyone also tell us? Yes, because I mentioned that. Yeah. Oh, okay. Next question. Okay, fourth one is, which city is the best in women security in India? So Samchi Mumbai.
And let me tell you that our India ranks 148 out of 170 countries, and the Norway ranked first in women security. Great. So shall we move on to the next? Hope everyone has answered. The right answer is Tamil Nadu. Really? have- Yeah, yes. yes. I give Tamil Nadu. In fact, I was wrong. Yeah, I thought it was Mumbai. यार तमिलनाडु में कोई रात को बाहर ही नहीं निकलता है. Yes. But for we Mumbaiites, it is Mumbai only. Yes, my vote also for the Mumbai. Cases for women are less in Tamil Nadu. Because वो लोग बाहर ही नहीं निकलते. मुंबई में आके आप what say Mumbaikars? Please. I agree. Radhika, please support me. And ma'am, Yeah, now so we got Lady Singham Nirbhaya squad also launched. Mumbai Police has launched for security. Yeah. So shall we move on to the next question? हमने काफी discuss किया इस topic पे आज. So how cervical cancer can be prevented? The vaccine names are there: MMR, tetanus, hepatitis A, and HPV vaccine. HPV stands for humanopapilloma virus. Dr. Bhavna का lecture सबको याद है. That's great. So let's move on to the next one. You should thank her also, right? Yeah, we have given a very useful information. Okay, sixth question. Which of the scheme provide education for girl and their welfare? अभी मोदी सर ने भी काफी इसके ऊपर बात की थी. तो scheme Ujjwala and the Beti Padhao. 60% have answered right. So the Beti Bachao Beti Padhao scheme was started in 2015, and it was aimed to improve the sex ratio of a girl and ensuring girls equality, preventing encouraging girls education, survival, protection of the girl child. And we have increased sex ratio in most of the states in our India, as I have shared that first PPT, right? That is a main good thing, like maybe impact of Beti Bachao Beti Padhao mission also. Yeah. Shall we then move on? Yeah. Seventh question is, which scheme promotes community participation through involvement of student volunteers for empowerment of rural women? So the option is Nand Ghar Yojana, Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra, E-Samvad Portal, Pradhan Mantri Awas Yojana. Empowerment का हिंदी वर्ड है इस ऑप्शन में. राइट आंसर में. बहुत हिंट दे रहे हो. यदि नहीं इजी कर दिया. So everyone have given the answer. (80-20 का रेशियो आ रहा है. So the right answer is Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra. So let us move on to the next question. Okay. Radhika ma'am, please answer. Women Helpline Scheme was launched on 2015, 2018, 2019 or 2017? Am I audible? Yes, maybe. Actually, I'm confused on 2017 and 18 between. I'll help you, Radhika. I have the answer sheet.
No cheating, huh? That's why I'm not answering anything. I'm just quiet. But really, Nidhi, thanks to you. मतलब you बहुत सारी चीजें इतनी एनलाइट हुई है एंड कम टू नो एंड अब ध्यान में रहेगा. So many things are going on in our country and हमारा ध्यान ही नहीं है. Yeah. So should I'll wait for few seconds also. So जो वुमेन हेल्पलाइन स्कीम थी उसमें ये था कि 24 आवर्स हम इमीडिएट और इमरजेंसी रिस्पांस दे वुमेन को, जिससे उनकी जो सिक्योरिटी पर्पस है वो उस नंबर पे कॉल करें. और जो नंबर है वुमेन हेल्पलाइन नंबर का वो है 1091. और ये लॉन्च हुआ था on 1st April 2015. And those who have marked 2015 is the right answer. सबके कितने किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 8 में से? So we can see like those who are able to actually submit the answers. You can see here. First question is whosoever has able to poll 100%. And the second one, Nidhi, you can just continue. I'm just sharing the answers for the. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर था जनवरी 24. एंड द सेकंड क्वेश्चन था कि गर्ल चाइल्ड डे फर्स्ट कब ऑब्जर्व हुआ था, वो हुआ था 2008 में. देन थर्ड क्वेश्चन था कि थीम क्या थी 2021 की नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, तो वो थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, जिसमें रंगोली बनाई गई थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारी बेस्ट सिक्योरिटी इन इंडिया, वुमेन सिक्योरिटी कहाँ पर है, तमिलनाडु, जिस पे से हमने बहस भी की थी. और फिर नेक्स्ट है सर्विकल कैंसर, जो भावना मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो वैक्सीन है HPV वैक्सीन. देन नेक्स्ट था कि जो प्रोवाइड हमें गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन और वेलफेयर के लिए जो स्कीम चली गई है, देयर आर मेनी स्कीम्स आते हैं. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसपे PM मोदी ने काफी चीजें बोली थी अभी लास्ट उसमें. Then which scheme promote community participation through involvement of student volunteer? तो रूरल एरिया में एम्पावरमेंट के लिए, विमेन की लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, उनको खुद पे डिपेंड करने के लिए, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री सशक्ति केंद्र मेनली वो आंसर राइट था. देन हमने नेक्स्ट बात की थी कि हेल्पलाइन नंबर जो स्कीम थी वो कब लॉन्च हुई थी, तो वो हुई थी 1st April 2015, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1091. हम कॉल करके उनकी हेल्प मांग सकते हैं. So that's it. These are the questions that I have presented here, and it was so really fun, right? Yeah, it was fun. It was informative. Many things that we didn't know, honestly. So it was really